China has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं राजा जी। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। एंड आज आपने भी नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज क्या ब्लैक का डे है क्या? ब्लैक डे है आज, ब्लैक डे हो गया है। अच्छा, नाउ यार एक इंटरेस्टिंग सा सामने आर्टिकल है। बाय द वे, कल रात को संडे नाइट में ट्रैवल कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं राजा जी को नहीं ला पाया। मैं बोला यार राजा जी के साथ तो बात करनी बनती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड और स्पेशली वेस्ट में। उसके ऊपर हमको थोड़ी बात करनी है। राजा जी ने एक आर्टिकल भी लिखा है चाइना पाकिस्तान के ऊपर। प्लीज डू सर्च दैट, इनके ट्विटर हैंडल पे भी होगा एंड आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो। बट मेरे को जो इंटरेस्टिंग चीज उस आर्टिकल में लगी, इन्होंने कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स बताई हैं जहां पर चाइना पाकिस्तान की अभी जो एक दोस्ती थी शहद से क्या मीठी, आसमान से ऊंची, और ये वो जितने बड़े प्यारे प्यारे डायलॉग होते थे इनके, वो थोड़ी दोस्ती टूटनी शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि पता चला है चाइनीज आर नाउ वांटिंग टू फोर्स दे वे थ्रू पाकिस्तान जितना वो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट में से अभी ये भी न्यूज आ रही है, जो इनके एनालिस्ट हैं, कई एनालिस्ट ये बोल चुके हैं अभी ओपनली कि भाई अमेरिका का अगला टारगेट विल बी चाइना इन पाकिस्तान, जो चीज हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं। तो राजा जी, फर्स्ट गिव अस एन इंट्रोडक्शन एंड आपने अभी क्या लेटेस्ट चीज देखी है that prompted you to write something, and then of course आगे बात करते हैं। What prompted it is जो भी चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और ये जो जरदारी का विजिट था पाकिस्तान को ले, ये चाइना को लेकर बड़ा ऑफिशियल विजिट था। शोशा बड़ी दिखा रहे थे पाकिस्तानी उसमें, बट दैट आल्सो टेल्स यू कि क्या हो रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। एसेंशियली इसलिए था क्योंकि अगर आप देखोगे जरदारी चाइना में था, भुट्टो यूएस में, एंड कहीं ना कहीं दोनों, बोथ ऑफ देम वर सपोज्ड टू गो एंड गो टू चाइना टुगेदर, बट वो ब्रेकफास्ट पे मीटिंग आ गई तो उसके लिए भुट्टो चला गया। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आई थिंक आसिम मुनीर हैज रियलाइज कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी से जो है डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की बहुत खराब हुई है, और जरदारी हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू द चाइनीज। तो ही हैज थॉट कि चलो चाइना से थोड़ा तो रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि काफी हॉस्टिलिटी हमने देखी है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, अंडर द सरफेस हॉस्टिलिटी व्हिच वी कैन से which has been erupting from last 6 months to 8 months. Plus जो ग्वादर एयरपोर्ट का टेक ओवर चाइना ने किया, बड़ा क्वाइटली किया, एंड चाइनीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी उसकी। सो दैट इज अ वेरी ह्यूज इंडिकेटर कि चाइनीज क्या कर रहे हैं, दे आर फोर्सिंग देयर वे इनटू पाकिस्तान बहुत वेरी फोर्सफुली। और अब जो न्यूज आ रही थी वो ये आ रही थी कि द चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी नाउ वांट्स अ फुटहोल्ड इन पाकिस्तान। They want to operate directly insurgency fight करने के लिए। They're not very happy. Pressure already चाइना का है पाकिस्तान पे कि उनके जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस को, प्राइवेट आर्मी को जो है एक्सेस दिया जाए पाकिस्तान में। तो इन चीजों को लेकर जो हमारा एक एनालिसिस है कि चाइना अपने आप को बलूचिस्तान में बचाने के लिए घुसेगा ही घुसेगा। दैट इज कमिंग ट्रू। और ये जो रिसेंट विजिट हुआ है, इसमें भी पाकिस्तानीज हैड नथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट हमारा रोल हमारा लोन जो 2 साल के लिए रोल ओवर कर दो। नाउ दे हैव आस्क्ड चाइनीज अगेन कि $3.4 बिलियन का जो हमारा पेमेंट है उसको आप रोल ओवर कर दो। क्या नहीं कर दो, गेट लॉस्ट पॉस्ट नथिंग हैपनिंग, तुम लोगों को कुछ रोल ओवर नहीं मिल रहा। सो एक तो वो था उसका। बेसिकली फिर से भीख मांगने गए थे, प्रेसिडेंट को भेजा था। कितनी बार भेजोगे फॉरेन मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी जर्नल को? प्रेसिडेंट ही बचा था, उसको बोला तू भी कटोरा लेकर चला जा, थोड़ी सी भीख मांगे वहां पे, देख ले तेरी बात ना मान लेते हैं। बट चाइनीज हैव नॉट रिलेंटेड, ऑन द कॉन्ट्ररी नाउ चाइनीज हैव मेड अ डिमांड टू हिम सेइंग दैट कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को डायरेक्टली पाकिस्तान में ऑपरेट करना। सो दैट इज टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड चाइना, एंड अमेरिकन्स आर लुकिंग एट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो तो बैठे हुए हैं, वो तो देख रहे हैं इसको। पाकिस्तान ने बड़े प्लान बनाए, पाकिस्तान ने बड़े प्लान बनाए हुए थे
अभी ये शमशाद मिर्जा वॉज इन यूके, वहां पे उसने इंटेलिजेंस चीफ जो है CIA के थे, MI6 के थे, उनके सामने बड़ा एंटी तालिबान स्पीच दिया है कि तालिबान की वजह से कितनी प्रॉब्लम है। और दे आर पाकिस्तानीज आर थिंकिंग कि अमेरिकन बैक करेंगे उनको अफगानिस्तान में। आसिम मुनीर इज थिंकिंग कि आई विल ओपन अ फ्रंट विद अफगान्स। तो एक तो रिफ्ट क्रिएट जो हो रहा है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, प्लस थोड़ा सा एग्रेसिव जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। ही इज लुकिंग फॉर अमेरिकन सपोर्ट देयर। एंड इसने वही गुट्टी चाइनीज को भी पिलाई है कि हम अमेरिकन को इन्वॉल्व करेंगे, अमेरिकन से सब कुछ लेंगे, उनको तालिबान को ब्रेक करेंगे। वंस तालिबान इज ब्रोकन तो PLA भी टूट जाएगा और TTP भी टूट जाएगा, तो आपका CPEC जो बढ़िया चलेगा। बट दैट गुट्टी इज नॉट वर्किंग, वो गुट्टी चल नहीं रही है, वो फ्लॉप हो गई। On the contrary, serious questions are being asked in US about Pakistan's ISI's role in different terror organizations. If you remember, drop site पे article भी आया है, right? Then Marco Rubio ने ट्वीट किया था, Marco Rubin ने AIA के कि like we eliminated Qasem Soleimani in Iran, we should take similar steps against ISI chief in Pakistan. If not ISI chief, at least ISI ex-chief Shuja Pasa, at least he should be eliminated for the role of terror they have played in the region and how they have destroyed America. Worked contrary to American interests. So इनको भी air strike करो, इनको भी drone strike करके इनको उड़ाओ। तो he has made a very strong case. So पाकिस्तान जो गुट्टी बना रहा था, वो गुट्टी लग रहा है कि उसको जहर की जो उसने गुट्टी बनाई थी उसको खुद पीनी पड़ रही है, क्योंकि the Americans are not buying it, the Chinese are not buying it. The interesting thing is यहाँ पर पाकिस्तान के बीच में जो ये चीजें चल रही हैं, जिस तरह से अभी अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली द अटैक्स इन बलूचिस्तान आर ऑन अ स्पेशल हाइट। आई मीन लिटरली नॉट अ डे गोज बाय जब बलूचिस्तान में अटैक्स नहीं होते। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई हैव नोटिस्ड रिसेंटली इज दैट TTP के जो अटैक्स हैं वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, दैट इज वन। एंड द फैक्टर दैट वी हैव आल्सो सीन दैट द अटैक्स इन बलूचिस्तान हैव बीन हायर देन द TTP अटैक्स, the quantum of attacks, although casualties उधर पे ज्यादा हुई हैं, but इधर पे numbers of attacks have been much higher. तो आप इन दोनों को कैसे equate करते हो? See, एक तो KP में by and large अगर आप देखोगे TTP ने they have taken good control of a lot of areas. उनका foothold बहुत ज्यादा है, so उनके जो attacks हैं बड़े concentrated हैं, जहाँ large army establishment है वहीं पर वो attack करते हैं। बलूचिस्तान में ये फैले हुए हैं, और बलूचिस्तान में अगर आप इस वक्त विंटर्स का भी देखोगे जो ऑनसेट है, KPK में उसका इफेक्ट ज्यादा है, बलूचिस्तान में उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, टेरेन के हिसाब से भी। It is the hardest terrain, but it's not, it's not covered into complete snow, and movement is not very difficult. Movement is still very easy. तो उनके लिए आज BLA के चीफ का स्टेटमेंट भी आया है कि they get prepared to face more drastic and more concentrated attacks, increase in attacks, increase in intensity. उसने आज का उसका स्टेटमेंट है, बलोच टाइम्स में निकला है, where he has said that it will be more intense now. So that is telling you कि what they are looking at, इनको पता है कि KPK में तो हमने इनको घेर के मारा है, बलूचिस्तान में there is an opportunity, ये इनको ठोकेंगे। और इंटेंसिटी ये है कि they have increased the war theater। पहले तो KPK जो था that was concentrated कि KPK में हो रहा है, अब जो है अब स्ट्रेच किया, war theater जो है पाकिस्तान में इंक्रीज हो गया। So from बलूचिस्तान to KPK, it's a big theater. So the element of surprise they want to keep. So they will hit in Balochistan, they will hit in KPK, they will hit somewhere in Punjab, they will hit somewhere in Quetta, they will do this. So they will keep them moving and they'll keep them busy. इनको एक जगह fortify करने नहीं देंगे। अगर पाकिस्तानी आके बलूचिस्तान में fortify करने की कोशिश करेंगे, ये जाके उनको KPK में ठोकना शुरू करेंगे। So they have increased, they expanded the area with the hope that saying that they want to completely stretch them out, thin them out, and then take them out. But इससे आप ये thin them out, so Chinese are watching this. How do you think the Chinese react to this? This is what the Chinese are saying. The Chinese are saying, boss, you have failed to take any action. You have taken money from us, raised a division. You were not able to protect CPEC. It's since you are so poorly stretched and you are so poorly equipped and your men have no morale, let our forces join hands. At least we'll be able to protect the key infrastructures. So the Chinese are looking at Pakistan's failure, abject failure. One, they are looking at Pakistan's failure. Second, they are also eyeing Pakistan, saying that you are deliberately doing this. You're playing the American game.
तो अमेरिका को खुश करने के चक्कर में लगे हुए, you are killing our investment. So they're not trusting the Pakistanis into this because they believe that if Pakistan wants, yeah, at least they can do something, but they're not able to do anything. They're just taking hits after hits. Basically, Pakistanis are taking hits and crying कि यार तालिबान ने हमको मार दिया. We are victims of terror. They want to play that victim card mentality कि हम victims of terror हैं, हमसे बड़ा कोई terror नहीं है, इंडिया भी इसमें है, अफगानिस्तान भी इसमें है, सब इसमें है, हमको सब मार रहे हैं. We are very poor and we need to have a fight against terror. We need to break Taliban. क्योंकि वो speech बड़ी interesting है शमशाद मिर्जा की, जहाँ उसने वो women education को लेकर बात की है. Then he's talked about divisions within Taliban and how they are not an effective government, how people are dying of hunger, all that nonsense Pakistani बोलते हैं. Suddenly Pakistanis have found democracy, for God's sake. So that tells you what Pakistanis are planning. The Pakistanis are deliberately doing it. It is suiting Americans as well. It is not suiting the Chinese, but then Chinese are forcing their way in. तो Pakistan is saying यार हम तो उनको रोक तो नहीं सकते आने से. तो वो अमेरिका को भी एक पाँव उधर रखा हुआ है, एक पाँव उधर रखा हुआ है. उनको बोलते हैं हम इनको नहीं रोक सकते, उनको बोलते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं सकते, हमको मारते हैं, अफगानिस्तान मार. तो पाकिस्तान बेसिकली ड्यूअल गेम खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा, बट इट्स एन एक्सपोज्ड गेम. For how long? Because at the end of it, आप अगर इसको देखोगे, चाइना को एक स्ट्रक्चर अपना जो भी करना है वो पैसे तो डालेगा नहीं. अब इसको पैसे और चाहिए, वो उसको रिन्यू करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट. आई थिंक राजा जी, कैन यू हियर मी? अच्छा, फ्रीज हो गए हैं वो. आई थिंक we will just wait for him to come back. But in any case, the interesting thing that I also heard today, which I will discuss with him, PAF base Bholari जो है, अभी इसका confirmation नहीं है, but it seems that some amount of Chinese forces have come there और वहाँ पर काफी थोड़ी Chinese movement दिख रही है. I'm so sorry I lost you. No problem. I'm so sorry I lost you. What I was saying is that I was talking about that PLF based Bholari. Now PAF based Bholari के अंदर Chinese troops अगर आ गए वहां पर, वो तो आपने बताया जैसे ऑफलाइन आपने बताया SEZ की तरफ से काम कर रहे हैं, ठीक है, fair enough. But that's also Chinese forcing themselves onto Pakistan कि भैया हम तो घुसेंगे अंदर. Now this doesn't seem very smart on the Chinese part. Why? यार तुम ऐसी कंट्री में घुस रहे हो वापस, जहां तुम पहले तो ठुक रहे हो, तुम्हारे पैसे खा गया, वाट लगा रखी है इस देश ने तुम्हारी, और फिर भी तुम घुस रहे हो उसके अंदर. तो क्या करेंगे बेचारे? Should they forgo their investment and say okay we'll keep on playing this status quo game and ठीक है चलाते रहो, लेते रहो, हमसे पैसे मत दो, रोल ओवर देते रहेंगे हम तुमको और तुम्हारे लिए कुछ मत करो. What are Chinese supposed to do? CPEC collapse कर गया, Jinping पावर से चला जाएगा क्योंकि BRI is what Jinping is staying in power in China on. CPEC is far too important to fail for Chinese, irrespective of what happens. CPEC fail नहीं हो सकता Chinese के लिए, Chinese perception के लिए. Chinese वो option क्या, अब उनको अपने भाई ने पीठ में छुरा घोंपा है, तो अब वो कोशिश करेगा कि मैं इसमें छोटे छोटे छेद इसके अंदर भी करूं, जहां से घुस सकता हूं घुस जाऊं भाई, जो रिकवर कर सकता हूं कर लूं, एटलीस्ट कुछ जबरदस्ती तो करेगा ना. और ऑप्शन क्या चाइना के पास? चाइना कैनॉट सिट आइडल because China knows if we sit idle, this is not going to get solved. They are taking a financial hit. Pakistanis are not paying them back. या तो मैं ये बोलूँ ना कि CPEC के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, Pakistanis have done well. The power projects are making good money. They are paying the Chinese back, and then the Chinese would have said, "Yeah, look, we don't mind. Let us take it slowly. It's going okay." On the contrary, the Pakistanis are always asking them for money, or always asking for loans, and then now they have gone again with the US. So the China has to watch over for its numbers. Middle East में already ईरान की बैंड बज चुकी है. China will be recalculating that as well. क्या चल रहा है? रशिया यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा, contrary to what Trump had said. वो अभी भी चल रहा है. तो Chinese will be also looking at कि how to get a sphere of influence. तो ग्वादर उसके लिए बहुत important है उस हिसाब से. तो अब he can't afford to be silent on it and sit हाथ पे हाथ रख के कि ठीक है जब ठीक होंगी चीजें तब देखेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. Chinese economy is taking a hit BRI की वजह से. They have taken a huge hit last time. उनका real estate collapse कर. There are problems in China. So अब क्या करेगा? Chinese will have to get in. This only way they will have to get in. What other way do you think Chinese have to get in? They have no other way. How do you think they want to take this forward? क्या करेंगे ये? I think step by step.
piecemeal by piecemeal. They can't swallow everything in one go. So they'll try to take piecemeal by piecemeal. They have struck a deal with Taliban on one thing, which is वर्दान के ऊपर. ठीक है. उसके बाद दे आर ब्रिंगिंग दीज 100 200 करके बंदे ला रहे हैं. कराची में एक एसएसजी ले लिया, ग्वादर एयरपोर्ट को ले लिया, अब उसको कवर करेंगे, उसके लिए सिक्योरिटी लाएंगे. ऑलरेडी वहां पर हैं. What people are telling me inside Pakistan that Chinese are already, immediate security जो उसका है वो Chinese forces ही देखती हैं, but they will try to increase the sphere of influence. और क्या करेंगे? They want to take that Saidi copper mine. उस पे इनकी बड़ी टाइम से नजर है चाइनीज की, वो इनको चाहिए, और हमारा पोर्ट इनको चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर सबमरीन्स. इफ दे वांट टू ब्रिंग देयर नेवल पावर टू ग्वादर, दे नीड अ सबमरीन पेन, दे नीड अ शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर यार्ड. उसके बगैर तो होगा नहीं. मेंटेनेंस का रिपेयर यार्ड चाहिए, और हमारा पे इनकी नजर है. पाकिस्तानी कुछ करना ही नहीं दे रहे. तो ऑब्वियसली पीस बाय पीस, बिट बाय बिट, जहां जहां पैर घुसा सकेंगे वहां घुसाएंगे, एंड देन दे विल ट्राई टू एक्सर्ट इट. अब इन्होंने फिर से बोला हमका $4 बिलियन दे दो. अभी खींचेंगे इनको कि नहीं देते? देखते हैं उसमें क्या होता है. लेट्स सी कितना चाइना प्रेशर डालता है, कितना पाकिस्तान विथस्टैंड करता है. अमेरिका के लिए तो कितना चाइना गिव अप करता है. अमेरिका के लिए तो बड़ा क्लियर इनवाइट होगा अभी चाइना को ठोकने के लिए. तो व्हाट डू यू थिंक अमेरिका इज गोइंग टू डू एंड हाउ विल दे रिएक्ट? Playing their game, they're happy. What is happening in Balochistan, they're very happy. They said TTP is a Pakistan's problem, so let them solve it. Biden was very clear about it. Trump, I think, also is going to be very clear about it. They are trying to lobby one of Trump's, Jared Kushner's friend, to lobby for them in US. It's not. I don't think it is going to work. उसको कुछ प्लॉट शॉट ऑफर किए हैं उन्होंने, 200-300 प्लॉट DHA के, कि तुम बनाओ और तुम बेचो, पैसे कमाओ उसमें से. So, but I don't think that is going to work. Americans will also say कि ठीक है, the Chinese are getting bogged down, and the Americans would like the Chinese to come into it. No? If you remember in 2014, Obama said that we will leave Afghanistan. It should be you who will be coming. You should be taking over. So the Americans want them to come in. So Americans will wait for them to come in, and then the game is on. This is great power Chinese to get thokfied. It is because see, any casualty for the Chinese in Pakistan is not going to go well inside China, na? This Chinese sense of invincibility and superiority and military might, ये collapse करिए, ये narrative उनका weak हो जाएगा ना. So they are very careful with that also. That is why they want to send in the private army like Wagner, PMG. They don't want to send regular troops. They're not interested. They know what is going to happen. So they'll send these contractors, security contractors. वो ठुकेंगे तो ठुकेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But जितने वो ठुकेंगे उतना Chinese then maybe will get aggressive. Will start backing them up with you never know. The Chinese will use drone attacks inside somewhere. Chinese are also capable of it. So let's see. They will also open a war theater. And how Taliban eventually survives the current. You can say fiasco which is happening there. A lot depends on that as well. अभी तो वहाँ भी बहुत tensions चल रही हैं. So it's a fluid situation, but it's certainly not looking good for Pakistan from both sides, both from Afghanistan and from China. This is one of the reasons why I discussed this, because जब मैंने आपका article पढ़ा, and then I started kind of just digging around the place, and I said यार, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो बोल रहे देखो चाइना घुस गया पाकिस्तान में, देखो इंडिया स्लीपिंग, देखो ये, देखो वो. नहीं तो इंडिया क्या करना चाहिए? चाइना का बॉर्डर बचाना चाहिए. आई थिंक दिस इज अ ब्लडी ट्रैप. पाकिस्तान तो गया, ये तो चाइना बहुत बुरी तरह फंसेगा यहाँ पर आके. हाँ तो see, anybody who's saying China got into Pakistan, well, good for us, no? Why are you sitting and you're making a noise about it? What are you supposed to do? You don't want to take the wrath of TTP and Taliban in Pakistan. No? Let the Chinese take it. Suits us. Secures our border even more. Pakistan implodes. So I think this overzealousness, the China ghus gaya or China, this is nothing but this is warmongering, and this is it's a nonsense thing, I would say. It's a very bad take, thinking that China ghus gaya. China ghus gaya to घुसना तो अच्छी बात है, घुसना चाहिए China वहाँ. It's good. Let them get bogged down.
You want pressure off your LAC. You want pressure off in Arunachal. You want pressure off everywhere. Let them get involved in Pakistan. What is the problem? On the contrary, what do you want to do? You want to increase the pressure by yourself by saying that we are not able to do anything. I think it's a very good situation for India. It's good for us. It's good for the Americans. It's good for everybody in the region. Yeah? Let China get involved. Look, you cannot be a military might unless and until you don't show your might. China has been trying to avoid that for a very long time. But now push has come to shove. They trusted Pakistan. They made the biggest blunder in their history by trusting a nation called Pakistan. Now they have to reap for it. And if China wants to call itself the great superpower, next coming superpower, it will have to get involved in Pakistan. It will have to dirty its hand in its boots. Without that, it is not going to be a superpower. So if they want to be a superpower, let them show that they are the superpower by getting control of their own assets, which they have spent so much of money on. Boss, if you cannot even protect your billions of dollars in your neighboring country where you put so much of money, you are no superpower. You're just a bully. That too, a bully which can be, dismantled with one strong push, and you come crying to your mama. So it doesn't matter. So let the Chinese prove they are the superpower. No? Let them go into Pakistan. Let them show the world they are capable of being a superpower. The Americans have gone into so many countries. The Americans literally obliterated the Middle East. They went into Vietnam. They went where not they went to. They went to Korea. Where have the Chinese been to? So you can't sit in your cage and, make noise. Come out. Time to come out. Otherwise, your CPEC will be gone. Your investments will be gone. Your G would be gone. Your CCP will collapse. Good. Either China implodes or Pakistan implodes. Now Chinese needs to decide what they want. They want to implode inside or they want to explode Pakistan. This is coming to be like a point वो बोलते हैं ना decision point की तरफ आ रहा है कि भाई इनको कहीं ना कहीं तो decision देना पड़ेगा कि भाई करना क्या है. What do we do going forward? Absolutely. Absolutely. And because they have tried everything. Knowing Xi Jinping's big-headedness, I think he will continue doing what he's doing. वो तो megalomaniac है. He is not going to listen to any this thing कि भाई नहीं अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा. He's not going to listen to all that. नहीं तो ठीक होगा कैसे? आसिम मुनीर के 7 साल बैठने से तो ठीक होने वाला है नहीं. तालिबान के रिफ्ट होने से ठीक होने वाला है नहीं. उसका जो ब्लो बैक आएगा वो पाकिस्तान पे बहुत गंदा आएगा. तो ठीक होगा कैसे? पैसे देने से तो ठीक होने से रहा नहीं. तुम 2016 से इनको दे रहे हो पैसे, उससे तो कुछ हुआ नहीं. वो खा पी के बैठ जाते हैं. तुमसे पैसे लेते हैं, जाके कनाडा में प्रॉपर्टी बनाते हैं, यूएस में प्रॉपर्टी बनाते हैं, यूरोप में प्रॉपर्टी बनाते हैं. तुम्हारे पैसों से बना रहे हैं. मेजरली तो अभी पिछले 10 साल से चाइनीज पैसे से बन रही है ना. पैसों से तो ठीक होगा नहीं तो और कैसे ठीक होगा? And what is Jinping going to do about it? He wants to sleep another 10 years on it. He can. 10 years later, CCP and Jinping will be nowhere. China will be down. So good. It's a time where you have time of reckoning for the Chinese. They have to wake up and they have to smell the coffee and say that time to take action. So they're doing that. यार when you look at this scenario, एक इसके अंदर बड़ा क्रेजी सा फैक्टर है कि अगर इट इज जस्ट चाइना एंड पाकिस्तान तो ठीक है, समझ में आता है इनके बीच में गेम हो रही है, गड़बड़ हो रखी है, इसके अंदर इतने सारे ओपन लूप्स हैं. इट्स नॉट इवन फनी, क्योंकि इस टाइम पे जब पाकिस्तान को भी ये ठोकना शुरू करेंगे, अभी तो कैंपेन सीजन शुरू होगा, जो सो कॉल्ड हंटिंग सीजन हमारी इंडियन आर्मी बोलती है जेएनके के अंदर. इस टाइम पे तो हंटिंग सीजन उस तरफ से भी तो शुरू होगा ना इनके ऊपर. अभी जो भी धुनकाई इनकी शुरू होने वाली है दूसरी तरफ से, इट्स नॉट इवन फनी, इट्स गोना बी बैड. एंड पिछला सीजन अगर हमने देखा जिस तरह से 16-20 बंदों का एवरेज, कई दिनों तक 16-20 बंदों का एवरेज चला, एंड टू अ पॉइंट they've lost almost 3,000 soldiers, 4,000 soldiers in a year. 4,000, more than 4,000. 4,300 super. आप लड़ाई में नहीं हो, 4,500 सोल्जर आपके साल में मर रहे हैं. दैट मींस आप ऑलमोस्ट 10 सोल्जर्स दिन के ठुका रहे हो अपने. तो वो तो एवरेज है पाकिस्तान में. 10 से 12 की एवरेज चल रही है. पुलिस को लेके 15 तक चला जाता है.
सस्टेनेबिलिटी क्या है किसकी? इस पूरे गेम की? क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट वन थिंग दैट वी नीड टू एनालाइज, ये प्रॉब्लम तो है हाउ लॉन्ग कैन दे सस्टेन? क्योंकि देखो अभी जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग एंड यू नो ट्रम्प इज गोना कम डाउन हार्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, ठीक है, वो सारा साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ रहा, वो जर्मनी को नहीं छोड़ रहा, एंड ज्यादा टाइम नहीं है जब व्हेन चाइना का गेम शुरू होता है। 25% ऑलरेडी उसने ठेप दिया वहां पर चाइना को, एंड चाइना इन हिज एरोगेंस एंड हैज काउंटर सैंक्शनड, तो द गेम इज ऑलरेडी ऑन देयर, एंड काउंटर सैंक्शन इज मोर ऑफ अ नैरेटिव एक्चुअली, तो सारा कुछ ढेले का सैंक्शन नहीं है वो जो उसने डाला है, बिकॉज इफ यू एक्चुअली सी कि चाइना 1% लेता है तेल अपना अमेरिका से और 1% लेता है कोल, तो उसके ऊपर जरा इसने सैंक्शन डाला है इंपोर्ट का यार 1%, आई मीन इट्स अ जोक। तो बट रेटरिक वाइज इट इज अ सैंक्शन, देयर इज अ काउंटर सैंक्शन एट द एंड ऑफ इट, तो यहाँ पर गेम तो शुरू होगी। व्हाट विल बी ट्रम्प्स नेक्स्ट स्टेप्स? See, Trump's first step is trade war. He wants to hurt you economically wherever he can. He wants to negotiate on economic terms. If economic terms doesn't matter, then it will be on geopolitical terms, which we are seeing in Pakistan. As far as Pakistan's sustainability, it is like whoever pays for the night, they will survive the next day. And it will be a day-on-day basis sustainability and survivability for Pakistan. Look, Pakistan is going to go through hell in next 5 years. There is a chance of Pakistan becoming new Afghanistan. They all are going to fight in Pakistan. And the mistake Pakistanis did, the biggest mistake what they did, they let the Hamas people come in this time on 5th February. The whole Western media has picked it up. Now, uska kya impact hai? See, Western media has picked it up. They picked it up as Hamas. What they've not picked up is this is the guy from Iran. No, they picked it up. His meeting with Fazlur Rahman has been picked up by Western media. They have mentioned it. So Pakistanis have a beautiful knack of, dropping the axe on their feet every single day. So this is another axe they dropped on their feet that day also. So this is what Pakistanis are brilliant at, cutting their own feet. So Trump will be looking very closely to this. And it's a low insurgency. I don't say it's a high insurgency. It's a low insurgency which might turn into medium insurgency. That means a lot of instability inside Pakistan. And that is where it will turn out to, because that is, you have to draw the Chinese in. Unless until the Chinese forces don't come in, it is very premature to, hit them. But you want to entice them by hitting the Pakistanis. So there will be a point where Pakistanis will break and tell Chinese private sector, "Okay, yaar, tum hi maro, hamara ho gaya, bas ho gaya hamara." That is where the game will start. So that can happen within a year. Maybe less. Exactly. So what are the circumstances when that happens? इसमें क्या चीज चाहिए होगी पाकिस्तान में होने के लिए when पाकिस्तानी बोलेंगे बस यार I can't deal with this anymore? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशंस है about Chinese troops there और जितने इनके आर्मी के जो ये मीडिया में आके बोलते हैं, they are not very happy with the idea कि भाई Chinese troops आए यहाँ पर. They are saying ये तो हमारी सवाल है, हमारा ये है, हमारा वो है, वो सब इनका ड्रामा शुरू हो गया. There is nothing. वहाँ कुछ Pakistani, there is no sovereignty in Pakistan in the name of sovereignty. KPK has already been taken by them. Balochistan is in a bad state. Chinese have taken over Gwadar. Americans are eyeing you very juicily. So sovereignty is with respect to Punjab and Punjab only, nothing beyond Punjab with Pakistan. Number one. Number two, पाकिस्तानियों ने कब बस करनी है, जो ही चीनियों ने कहना 4 साल के लिए हमारा लोन हमने पीछे कर दिया और ये थोड़े से $500 million और पकड़ो और साइड हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं इनसे डील करना. और उनको कहीं ये लगेगा कि शायद चाइनीज के आने से अफगानिस्तान जो है ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे और तालिबान जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हमारा प्रेशर कम हो जाएगा. दैट इज वेयर इट विल गेट डाउन टू हाउ मच. दो ही मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सी कि चाइनीज कितना बिल्डअप करते हैं इस बारी प्रेशर ऑन द रोल ओवर, एंड हाउ डेस्परेट इज पाकिस्तान फॉर द रोल ओवर. क्योंकि अभी तो वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है $20 बिलियन, तो इनको भी उतना नहीं है कि नहीं यार हम मरने पे तो नहीं पहुंचे हुए. तो जितना ये स्क्वीज होते जाएंगे, एंड दैट इज आई थिंक वन थिंग ट्रम्प विल डू. 20 बिलियन तो 10 साल में ना, तो आप वो तो पाकिस्तानियों को 10 साल नहीं समझ आते ना, उनको 20 बिलियन दिखते हैं, उसके ऊपर उनको कुछ समझ नहीं आता. इकोनॉमिक्स उनके गेम नहीं है ना. फौजी को इकोनॉमिक कहाँ समझ आती है, उसमें $20 बिलियन दिखता आ रहा है. ठीक है. And I think if the funding from the West starts squeezing,
अगर उन्होंने फंड करना बंद कर दिया या IMF ने थोड़ा टाइट और कर दिया तो देन ये चाइनीज को बोलेंगे हाँ बाप आ जाओ। अभी तो ये वही बार्गेनिंग चिप यूज कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आई एम होपिंग बाय दिस ईयर थिंग्स विल बी फार मोर क्लियर, क्योंकि बाय दिस टाइम दिस ट्रेड वॉर जो है, टैरिफ वॉर जो है, ये सेटल स्टार्ट भी होगी और by end of this year it will settle down somewhere. Who is winning, who is losing, we'll know. So if it's not working for Trump, then option number 2 would be to squeeze Pakistan further for the Chinese to, you know, get into Pakistan. So by this year end, we should be knowing kya ho raha hai Pakistan. आप ये now when you last में before we get into some questions, there are some very interesting questions. If you look at थोड़ा सा, let's just ball game this a little bit. अगर this whole battle that is going on, TTP ये तो expand करेगा as we've discussed. और ये पंगे तो लेंगे हमसे भी, there's no question. अभी भी उस दिन BAT ठोके इनके, ठीक है, SSG ठोका है, BAT साथ ठोके हैं इनके, साथ ठोके इनके। इस साल ये बहुत कोशिश करेंगे, इस साल ये बहुत हॉट रहेगा, LOC बहुत हॉट रहेगा, ये बहुत कोशिश करेंगे अंदर आने की। Why especially this year are you saying? Because the pressure inside, jihadi pressure is too much in Pakistan. Pakistan needs to keep its jihadi game on top. They know what is coming in Afghanistan. They know what is coming in China. So they need to prep their jihadis. And India is an enemy. They have to show. तो इनके लिए तो बड़ा जरूरी, और थोड़े बहुत ऐसे आ गए हैं तो वो चाहे फिर वो बीक के आए हैं, तो वो जब भी आते हैं आदत से मजबूर हैं, इनकी वो रुकती तो है नहीं, तो इनको एग्जर्ट तो करना है इनको। So they would want to show Americans that Kashmir is still relevant, we are relevant, बात करो हमसे, Chinese को involve करो, ये करो वो करो। So they will be, this year will be hot on LOC. Interesting. तो ये मतलब they'll probably tell the Chinese, see we are doing this also, थोड़ा help करो ये वो and all that. But what they are not calculating is, Aadi, maybe we go and we chokify them with a drone somewhere. They might not be thinking about the Indian response. The Indian response could surprise them, could surprise the Chinese and the Americans. And if that response comes, then Pakistani will be in huge trouble. But let's see what happens. I'm not going to comment too much on it. I mean, man, such a stupid bloody scenario. I mean, and which has such a easy, what do you call, solution. It's not that the solution is difficult. There is no solution when it comes to Pakistan. How is there a solution? I mean, see, the solution is not that great, but it is about groveling at the feet of America and saying, Saab, bachalo, Saab, bachalo, Saab. That is what they are doing. Americans will do it. No, I don't think Americans will do it. There's a very strong lobby sitting in America who's saying these Pakistanis cannot be trusted. And why would America save them? And the cost America will put on Pakistan to save them, wo kya hoga? How much would that be? And what will the Chinese say? Ki, okay, you went back to your daddy. After making me a brother, you're going back there. What about us, boss? They will extract a very heavy price. There is no easy solution in Pakistan. And how would you sell America to your jihadi crowd, जिसपे आप रोज बोलते हो America agent है, रोज गाली बकते हो? How will you sell it to the mullahs sitting in Pakistan right now, who are so anti-American that even Hamas is not that anti-American that Pakistanis are anti-American? How would you sell that? There is no easy solution for Pakistan. It's trapped in its own game. It's trapped in its own web. यार ये बड़ा, I mean, हम लोग इसके बारे में काफी होप करते थे कि ये सिचुएशन जल्दी आए। आ गई सामने भैंस की आंख। जब दोनों साइड को, चाइना एंड पाकिस्तान, both of them are now in a place where they have to acknowledge the reality कि भाई ये चलेगा नहीं। तो obviously they won't come out and say this, but their actions will say it. They are still hoping वो गया, शहबाज शरीफ गया आज ही वही फिर से उनके पैर पकड़ने की, तालिबान के साथ कुछ करवाओ हमारा।
इनको तुड़वाओ तो दे आर स्टिल होपिंग कि तालिबान ब्रेक करेगा तो हमारा कंट्रोल आएगा, वो स्ट्रेटेजिक, दे आर स्टिल बीइंग डिल्यूजनल अबाउट अफगानिस्तान. What they are not realizing is that the Afghan blowback in Pakistan is going to be far worse than in any other region. हमास के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. ये लोग लेके तो आ गए बेवकूफ. अभी अगर हमास ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया तो ये तो ठोकेंगे इतनी बुरी तरह से. एंड बाय द वे सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी, हमास वाला बंदा वहां पर बैठा हुआ था अंडर ओसामा टेंट हाउस. Yeah, Osama tent house. I told you, the Pakistanis have a knack of dropping the axe on their feet every single day. यार But what do you expect from a jihadi? मतलब और क्या लिखेगा? जहादी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो क्या लिखेगा? ओसामा टेंट हाउस यार, क्या रहे हो यार? मतलब मैं वही कह रहा हूँ, क्या लिखेगा? ट्रम्प टेंट हाउस थोड़ी ना लिखेगा, वो तो ओसामा ही लिखेगा, वो तो उमर ही लिखेगा, तो जहादी तो वही लिखेगा, और क्या लिखेगा वो? आप क्या एक्सपेक्ट करो जहादी से? ओसामा टेंट के नीचे हमास और लश्कर तैयबा बैठे थे. आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग लश्कर इज वेरी वेरी डेंजरस. लश्कर को वॉच करो. तो बैठे हैं वो भाई भाई, वहां बनेंगे, वो ठोकेंगे सब जगह से, सब ठोकेंगे उनको. आप देखो. I mean, ओसामा टेंट हाउस, मैं देख के मैं बोला, are you serious? Excuse me, ओसामा टेंट हाउस, that is what you've got? और कुछ नहीं मिला आपको? ओसामा टेंट हाउस. See, that is the umbrella, no? He's where the epitome of jihadi symbol, Osama bin Laden. उससे बड़ा तो कोई था नहीं. और ओसामा टेंट हाउस जो पाकिस्तानी पीओजे में, उसी ओसामा को जिसको पाकिस्तानियों ने बेच दिया अमेरिकन स्कूल की, इसको मारा. You're giving too much That credit tells to them. you. No, I'm not giving credit. I'm just telling you the inside how much these jihadis would be holding on. Ki when the right time comes, what are we going to do with these journals? The hate they have inbred, and they're using them right now. They think Pakistani journals think they're using these idiots. What journals don't know is that these guys are using the Pakistanis as a useful tool. Ultimately, we'll make a mincemeat out of them. I mean, it gets funnier and funnier and funnier day by day by day by day. It's not, I mean, sitting on the side, you're like, यार, ओ बेवकूफों, ओ गधों, देखो क्या कर रहे हो तुम अपने साथ. गधों की भी बेइज्जती मत करो. गधे भी थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं. ये गधों का भी क्रॉस है. नहीं, आई लव गधास. ये गधों के भी क्रॉस हैं. वो वाले क्रॉस जिनके जीनोम्स फेल हो गए, बड़े वीक जीनोम्स, वो डीएनए पे बने. ये गधों के भी बात है. गधे तब भी थोड़े से स्मार्ट होते हैं. नहीं, आई लव गधास, ऐसी कोई बात नहीं है. आई लव ऑल एनिमल्स. मेरे को बड़ा प्यार है प्यारे प्यारे जानवरों से. एंड Peter should find Aadi for that. नहीं. Peter is George Soros यार. I am not George Soros. भाई. ठीक है. We need to take it over from George Soros, no? So take money from George Soros and use it for our own interest. Seriously यार, ये क्या है ये? It's but last time I have to say one thing. Nobody can say this to us that we didn't say so. We said, I told you so. पाकिस्तान को हम ये बड़ा क्लियरली बोल सकते हैं, बेटा, we told you so. We can see what is happening there. We know more about Pakistan than the Pakistanis know about themselves. ये होगा तुम्हारे साथ, हमने तुमको बोला था, नहीं सुनते. अब देखो मजा, अब आएगा बहुत बुरी तरह तुमको मजा. You guys are going to have some fun going forward. Anyways, चलिए, let's get into questions. मेरा request to everybody is please like the video, subscribe to the channel. Thank you for coming in. And guys, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया है, अब तो थोड़ा शैडो बैन हटना चाहिए. मेरा रिक्वेस्ट सबसे है कि प्लीज, now that I'm back from my travel also, so the show times is that everything is the same. सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं. लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. सबसे पहले अननोन बनमैन है. सोनम इन पाकिस्तान, समथिंग बिग कमिंग अप. Sonam Wangchuk can't move. He went for a climate conference to Pakistan. He must be making an igloo and an Iceman for himself. Sonam in Pakistan, something.
भाई जब वो Who is पीक पे था Sonam ना, यार? जब लद्दाख की इतनी सपोर्ट थी, तब वो कुछ नहीं कर पाया, अब क्या करेगा? Who is he? कौन है? घोड़ा है एक नंबर का। बिल्ला बाबा की जय, थैंक यू। हाउ मुनीर स्टेबलाइज पाकिस्तानी इकोनॉमी लाइक अनलाइक 2022 आटा क्राइसिस? Yeah, if begging and getting money from begging is stabilizing economy, then kudos to you for understanding economy the way economy works. And if asking for rollovers on the loans all the time, every year from the Saudis and from the Chinese and from the Americans is the idea of running an economy, there is no stabilization of economy. And Atta crisis, yes, they had. They will have a far more crisis. Just wait and watch. अभी इससे बड़ा क्या आने वाला है भाई? अब देखो, अब जब ये शुरू होगा तो साल 1-1.5 साल के बाद तो फिर आटा क्या है, पानी नहीं मिलेगा हमको। Fondup ji, thank you so much. कहते हैं still enjoying Delhi victory. Enjoy sir, enjoy. All right, KSV Prasad ji, oh, seeing you after a while, brother. What could be the circumstances wherein China will back Taliban Balochistan freedom movement? The Chinese are already backing the Taliban to some extent. Yeah, they have a working understanding. BLA, why would they back BLA? And who against will they back BLA for? Will they back BLA against the Pakistani army and use it for their own tool? BLA has sent them a message many times saying that negotiate directly with us, not through the Pakistani army. But I don't think Chinese would be looking at negotiating. They rather negotiate Taliban than BLA. If the Chinese negotiate directly with the BLA, तो भैया फिर तो नहीं तो फिर the Chinese have to sit in Balochistan, ना? नहीं, that's the day The Raja Chinese have साहब to and me will literally declare sit in Pakistan टूट Balochistan. गया. हाँ, so that is the day Pakistanis are over. BLA, that day China is officially in Pakistan and then they are talking to BLA, and BLA is not looking for money only. The BLA will say, okay, we take money from you, but we'll keep on torpifying Pakistanis. Are you okay with it? Chinese say, okay, good. Good luck. Tried that with the TTP से भी तो try करा ना Chinese ने, हुआ नहीं कुछ. हुआ नहीं, it won't work. TTP से भी तो try करा कि भाई हम तुमको पैसे दे देते हैं, कुछ इधर पे कुछ करो मत. हुआ नहीं कुछ. वहाँ वो ठोकते हैं अच्छे से. साइड में लगा के, मतलब बोलते हैं ना एकदम मस्त मलाई लगा के ठोकते हैं वो. अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना, शहबाज शरीफ called for meaningful talks on Kashmir issue. मैं बोला अच्छा, जूते के देता हूँ मैं तेरे को meaningful talks. हाँ ठीक है, तो करो भी withdraw. The only thing to talk about is that side we need it back. When are you withdrawing, sir? Gladiator ji, thank you. Do you think Pakistani can acquire Chinese FGFA soon? AMCA is a decade away. Should we wait or go in for a stopgap measure? Bhai, leave our Air Force alone. We'll talk about it in the next about month or two, because there's something happening, and let that thing happen. But materialize. Tell me, will the Chinese FGFA come to Pakistan? What will this guy Asim Munir will have to sell himself for that? No. Why does Asim Munir needs to sell himself? He needs to sell Pakistan to China. China को वैसे ही बॉर्डर में बैठा हुआ है. Next time Chinese Air Force will land, Asim Munir will say, देखो Chinese ने हमको जहाज दिए, हमारे जहाज है. ठीक है. Subsequently saying we are subsequent. See, I don't think the Chinese are going to do that. Chinese have tasted Pakistanis very well, and Chinese have not made any official. By the way, I'm repeating this again and again, and I'll repeat this again. Chinese have not officially confirmed in the first go that they are doing something like that with the Pakistanis. It was only the Pakistani media which was going gaga over it. I don't think Chinese will now even supply tire to the Pakistani MPVs to move the way, because Chinese are going to. Bro, you're cracking up. Very, you're very cracking up. Even you were. Is it better now? No, you're cracking up. I have no idea. Is it better now? Wait. Better. So, आप बोल रहे हो कि Chinese will never give? I said the Chinese never said we are giving. It was the Pakistanis. I've said this many times. The Pakistanis made a huge noise about it. But given the way Pakistani-China relationships are going, China ने इनको टायर नहीं देना MPV के लिए यार. जहाज की तो बात ही छोड़ दो. Forget about it. Chinese are not going to give them anything.
It's not going to आपका happen. क्रैक हो रहा है, क्रैक. Okay, बिला बाबा की जय. Serious idea. US, China use Pakistan for medical experiment to get money. नहीं यार, वो वैसे काम इधर पे नहीं करने यार, दूर करो हमारे से गंदे काम. Swapnil ji, thank you so much. Is giving Americans a base in Ladakh a good idea? No. It's never a No, good why idea. would we give base to them? And why should we give a base to Americans? Are we a client state? Are we Pakistan? We are a powerful country. Chan, We're looking we to will become a not super give. power. Why should we give it to them? Vikas ji, thank you. Do you think Waqf bill will pass in this session? Yes. Do you think the BJP started playing the game in Manipur that played in Jammu Kashmir by implementing president's rule? At the moment, it does look like it. Any comments? Let's see. Lag to raha hai, unless until they choose somebody else. But I think it will go to the president's rule. And Waqf bill, they should pass it. Yeah, why not? Long overdue. That's true. And Krishnan ji, thank you so much. What is cooking between India and Bhutan? Momos. I'm telling you, momos. That's it. ऐसी चीजें बात नहीं करते. Billa Baba ki jai. Thank you so much, sir. Namunas in India want to trade with Pakistan. इनका क्या इलाज है? Throw them in the Indian Ocean. Namunas are namunas. They want to do anything. Let it. Throw them in the Indian Ocean. MPC Saab, thank you. Pak expert geopolitical analysts are predicting a revival of Pakistan's nuclear prominence in Muslim world due to the Trump Gaza takeover plan. Oh boy. No, not really. And I'll tell you why. This Gaza takeover plan is something which Trump has just said. There are far too many issues into this. It is not going to be an easy one. And Muslim world is not going to go gaga over Pakistan because Muslim world also knows Pakistan is the least Islamic country which can be trusted. They have sold their souls, their underwears, their everything for money. So Muslim world is also not very keen on Pakistan. So no. You know, to me, what it looks like, Trump is a guy, you know, who throws these obnoxious bloody proposals. And then he looks out, ki kya jawab dega? You know, because at the end of it, everybody says two-state solution. But nobody's coming out and say how. Not possible. So he said, okay, I will tell you how. This is how. Now, debate. Come up with something. Give me a counter offer. So I think it's that, but let's see. I mean, to my mind, it kind of looks like a weird thing where he started the conversation once again. Once again, MPC Saab, thank you. I wish the government of India, government in Delhi will do a quick cleanup and rebuilding of roads and services and keep old street photo in every street as reminder. Well, what I'm happy about is they've locked the secretariat. They've locked the secretariat completely. So there's no. Let's see how what BJP does in Delhi. No, let's wait 3 months. Yeah. Pakistan asks for 4 billion from CCP. Meanwhile, CCP takes back bonus of corporates. All in blunder of wonders. Yeah, Chinese economy is in bloody deep shit right now, man. All right. Parthaji says, when Yahood and Hanood agent 008, Imran Khan is coming to denuclearize Pakistan. अच्छा, राजा साहब ब्लॉक वो फ्रीज हो गए एक एंगल के ऊपर फोटो पोज लगा के. But see, I'll tell you what, Imran Khan is a pressure tactic, ठीक है, and Imran Khan is a pressure tactic that both sides use. मैंने ये चीज देखी है कि Imran Khan is a tactic that, you know, these guys basically used to. Okay, here he is again. So Imran Khan is a pressure tactic that Asim Munir keeps using to kind of keep the public busy. You know, my recent opinion of Imran Khan is people are paying too much attention to him. He's a useless buffoon. I mean, don't we remember him? No, he's a very useful buffoon for us because what he did with the Pakistani establishment, none of the Pakistanis have, none of us have been able to achieve that. So he's very useful in that sense to us. I changed my opinion. He's a useful buffoon. Useful buffoon, but buffoon are nevertheless. Look, Imran Khan is not a solution to Pakistan.
the Pakistanis believe he is, so they should give him a chance. And look, as a democratic country, you should choose your leader democratically. You can't do what Pakistanis do. Fair enough. But what difference will Imran Khan make to the fate of Pakistan, which is unfortunately very bad, is not too much, honestly. Unless and until he comes and he dismantles like Trump has dismantled everything in US. He comes and he dismantles the military establishment completely. Not happening, boss. All right. Shailendra ji कहते हैं, will both of you agree that there is a vacuum created at Gilgit-Baltistan, creating a situation for China where to defend Xinjiang or Yunnan? Aadi's prospects theory, two-way encircled front of China. I believe this. I have a very clear belief that they're going to face challenges from the north and the south, from Yunnan as well. What do you think? They will eventually. Yes, they will. Gilgit-Baltistan is a vacuum, but as of now, they are trying to control GB as well. They're trying to, but they're going to face challenges. And trust me, मैं एक चीज बड़े clearly बता दूं. If they try and do something like this, Yunnan will blow up. Who does it? We'll figure out Yunnan later. Will blow up. No, but if they do it via Taliban, then it won't blow up. No? Yeah. That's the key. Night Fury. How likely India supporting the idea of China taking over the areas of Pakistan, POK, where freshwater flows, so it helps China in return. They have to subdue all anti-India forces. We can do that ourselves, and they can not ask for any. I don't think. Yeah, and second of all, the Chinese are already present in POJK. It's POJK, by the way, not PO. Right? If you see the dams which are built on that river are the Chinese dams. The Chinese who have invested money in that, not the Pakistanis. The control is with the Chinese. So it's different. Last few. Shadowstorm, thank you. I see the keys with the US. If they want the game to start, they just need to tighten from IMF, and then the pressure will build up, and then they will run to China, roll over, and then China will come in. I'd love that. I'm sorry, let me read this again. He is with the US. He's with if they US, want the game to start, they just need to tighten from IMF, and then the pressure. Yes, true. That's what I'm saying. The moment the Americans squeeze them and the Chinese squeeze them, the Pakistanis blow up. I'd love for that to happen. Fast. Trump saab, chalo bhai, all of us, we will write a letter to Trump. Immediately do this. Because the more Chinese get sucked into Pakistan, China to marega, Pakistan to marega, China bhi jayega saath mein. So it'll be fun. Sanjay ji, thank you so much for your super sticker. Gladiator Saab, thank you. Excited and waiting for your episode on the Chinese economy. Yes, sir. I just came back yesterday night. So yeah, about 50% of it is done. Now I'm free. I'm going to figure that out and do the needful. Raja ji, thank you so much for adjusting to my timeline here. I'm so grateful that aapne. Sir, thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you so much, guys, for joining in. We shall see you today night. Till then, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Like and please drop a comment before you sign off. Jai Hind, Jai Bharat.